Oil drop of 12 excess electrons is held stationary under a constant electric field of this much. Density of oil is this much at estimate radius of the drop. This is a Millikan's oil drop experiment. In this experiment, what happens? Due to its mass, gravity pull, the particle of oil try to settle down under the gravity. We give it certain charge and create an electric field in such a direction that electric field will pull it up. Who is pulling up? Electric field. Who is bringing down? Gravitational field. And we adjust the two in such a way that it remains stationary, neither going up nor going down. This is Millikan's experiment. It is that situation. Now in this situation, they are asking us that equilibrium has been reached, and now we have to find out the radius of the drop. Now in that equilibrium, where does the radius appear? The answer is, how it is coming down? During equilibrium, mg, which direction? Downward, is equal to force of electrical force. What is formula for electric force? For the charge q placed in electric field E, the force is q into E, and we will direct it in such a way that its direction is upward. Okay. Now I ask you, if there is an electron of the charge, how much is the charge on electron? Minus E. What should be the direction of electric field so that it experience a force upward? What is the direction of electric field? Should the electric field be directed downward, upward, left or right? The answer is electric field should be directed downward. Downward electric field means what? It starts from plus, goes to minus. See, minus. Which direction it will be attracted? Upward. That is opposite to electric field. Okay. So remember this thumb rule. Electron is always experiencing a force opposite to the electric field. Okay. And how much is the force? Q into E. In case of electron, it is E. So the force will be E into E. This is E into E. mg. Okay. Now we will try to find out where will we figure radius. Okay, tell me, radius कहाँ आएगा? Radius से याद रखिए, remember this, radius makes volume, 4/3 pi r cube. Volume multiplied by density, mass, and here is the mass. तो radius कहाँ है? Mass में. Now tell me what it will be. This is the formula. Here is the radius we have to find out. So if we want to find out radius, rest all the numbers should be available with us. Okay, find out. You know the value of E by your knowledge, or otherwise it is given in the question. How much is that? Charge on electron 1.6 into 10 to the power. Yes. How much is electric field? Electric field. Right? Density 1.26 gram per centimeter cube. Will it do? This electric field and E both
Oil drop of 12, okay, I forgot it, you are right. 12 excess electrons. ठीक है, 1 electron is this much, we should do for 12 electrons. So this is charge Q, Ne. Q is equal to Ne, and here N is 12, E is this much. Clear? Okay. Now we have to write density. The density is given here in gram per centimeter cube, but here what we are using, electric field, Newton. This is SI system, this is CGS system. So in one sentence we have to do conversion, either SI to CG or CGS to SI. So please convert 1.26 gram per centimeter cube to kg per meter cube. 1.26 gram. Okay. देखिए मैच करके इतना ही आता है क्या? Here. Now you find there is only R which is unknown and you can calculate it. Okay. So इसे calculate करिए और करके बताइए R कितना आएगा. Okay. It's a simple mathematics. All multiplication, division. After you do all this, you will get this answer. So what we have learned basically, the force of electric field upward is equal to mg downward. This is how we will start. Where do we incorporate radius? In the mass. That is pi r 4 upon 3 pi r cube multiplied by density. That is the mass. And we know the value of Q. Q is equal to Ne, 12 particles of E. E electric field is given here, and then we will make everything in SI system. Then only we can do the multiplications. Okay, so this is, we have done 1.25, and now we'll go to the next one. Which amongst the curves shown here cannot possibly represent electrostatic field lines? इसमें बहुत से examples दिए हैं बुक में. I will make certain examples. पूरा डायग्राम मैं नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ वो वाला पॉइंट हाईलाइट करता हूँ which will tell us that why it is a correct electric field and why it is not a correct electric field. Okay, so there is a surface here, all positive charge outside the surface, and they have shown electric field like this way, and here it is this way, and here it is this way,
and such things. This electric field is not possible. Why? Give me one reason that why this electric field is not possible. Because they are not out from the electric field perpendicular. Here perpendicular is important. See, this is the surface, this one, and this is electric field. This angle is not a right angle, therefore this electrostatic field is not represented correctly. This will not exist. Okay, so now we go to example B. Is this electric field possible or not possible in the nature? Okay. No. Why? From minus, what happens to the electric field lines? Answer is, at minus they terminate. They do not start from minus. And in this diagram what they have shown? From minus the line starts. So this is not possible. ठीक है? Then we show you another one. Oh, that is same. In the third diagram, I don't want to make it. There are lines terminating at positive. Again, it is not possible. That's all. Right? So if I make a diagram like this, plus, plus, and the line is like this. Why? It cannot terminate at positive. It always go away from positive. Now, there are two bodies. These are all negative charges. These are all positive charges.
and there are electric field lines over here going out, going out, going out, and some go out like this, some go out like this, starting from plus going to minus, starting from plus going to minus. There are few which go like this, plus to minus. There are few which go like this. Is it everything all right? कि कुछ गड़बड़ है क्या? Yes. The electric field lines are always discontinuous curves. They are never closed loops. Yeah. ठीक है, तो ये अब आपको सब रीजन समझ में आ रहे हैं. Whenever you see a picture, you can always make out कि कहाँ पर क्या गड़बड़ है. Why this does not represent an electric field. Okay, now we go to the next question. Okay, please read this question and try to understand the diagram. In a certain region of space, electric field is along z direction throughout. That means in x and y there are no direction. In our board we have this direction to work, so we will think this is the z direction. This is x, this is y, this is z, and we have only in z direction the electric field. Okay, so we have electric field here in z direction, z, and electric field is in this direction. This increase, every 1 meter this electric field increase with the amount 10 to the power 5 Newton per coulomb. What are the force and torque experienced by a system having a total dipole moment equal to 10 to the power minus 7? What is this? Coulomb meter. Here cm is not centimeter. This is coulomb meter. Okay? In negative z direction, what does it mean? There is a dipole. How that dipole is placed? Thoda just see the words. System having a total dipole moment equal to this. And what is the direction of dipole moment? Negative z direction. Negative z direction में dipole कैसे रखा जाएगा? Can you imagine? Dipole की direction किधर से किधर होती है? Yes, minus q to plus q. और यहाँ पर उसकी direction कैसी है? Negative z direction. That means this is the direction of P. What is this P? Dipole moment. This is dipole moment. This is minus q. This is plus q. This is placed in which direction? Negative z direction. Negative z direction. What is the value of P? The magnitude is 10 to the power minus 7 coulomb meter. Okay. What we are supposed to find out? The force and torque. How do we find force and torque? Do we have any force or any torque in this?
टॉर्क कब लगता है, फोर्स कब लगता है? व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन ए डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? हम लोगों ने पढ़ा है द नेट फोर्स ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. क्यों? प्लस क्यू के कारण कितना फोर्स लगेगा, Q इंटू ई, और माइनस क्यू के कारण कितना लगेगा, माइनस क्यू इंटू ई. तो नेट फोर्स कितना हो गया? इसमें एक कंडीशन है. कंडीशन क्या है? माइनस क्यू और प्लस क्यू बोथ आर प्लेस्ड एट ए पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज E. तभी तो माइनस क्यू ई प्लस क्यू हुआ. दैट इज नॉट हियर. यहां पर माइनस क्यू है, यहां प्लस क्यू है. क्या दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है? ये क्या दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है? नहीं है. इसलिए माइनस क्यू ई और प्लस क्यू ई इक्वल नहीं होंगे. और अगर इक्वल नहीं होंगे तो उसका नेट फोर्स जीरो होगा क्या? नहीं होगा. देयर विल बी सर्टेन नेट फोर्स एंड दैट नेट फोर्स वी आर सपोज टू फाइंड आउट. ओके. 10 to the power minus 7 centimeter coulomb meter in negative z direction. Okay. Then what about torque? Torque का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क के फॉर्मूले में 3 फैक्टर होते हैं. बताइए कौन कौन से? Q, सॉरी, P मल्टीप्लाइड बाय, रिमेंबर, PE cos थीटा, PE sin थीटा. टॉर्क के लिए कौन सा था? यस, टॉर्क के लिए PE sin थीटा. तो हमने याद किया हुआ है टॉर्क ऑफ ए डाइपोल इज इक्वल टू P क्रॉस E. Okay, now my next question is, in which situation torque is zero? If P is not zero, if E is not zero, then how torque can be zero? Theta. How much should be theta so that torque is zero? And नहीं, 90 में तो फुल हो गया. और बोलो 180. So if theta is 180, again sin theta is 0. And now you tell me in your question, how much is theta? What is the direction of E? E इस तरफ है. And what is the direction of P? What is the angle between the two? 180 degree. Therefore, how much is the torque? 0. एक आंसर आ गया आपका. ठीक है, तो प्लीज नोट डाउन द टॉर्क. ये फॉर्मूला लिखेंगे. ये एक आंसर आ गया. अब दूसरा आंसर क्या है? फोर्स. व्हाट आर द फोर्स एंड टॉर्क experienced by a system having a total dipole moment equal to 10 to the power minus 7 P. थोड़ा इसके बारे में सोचिए, बताइए कैसे निकाल सकते हैं. ओके, इन 2 पॉइंट्स को मैं नाम देता हूं. दिस इज A, दिस इज B. मुझे ये बताइए कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग है, A पर कि B पर? किधर ज्यादा स्ट्रांग है? B पर. ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है. माइनस Q किस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करता है? माइनस अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड और अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड? माइनस. माइनस. नेगेटिव चार्जेस एक्सपीरियंस फोर्स अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन. तो यहां पर इस पर फोर्स किधर लग रहा है? ये इस तरफ F.
पॉजिटिव चार्ज किधर फोर्स एक्सपीरियंस करता है, अलोंग ही, तो इस पर फोर्स किधर लग रहा है, इस तरफ. नाउ विच फोर्स इज लार्जर? देखिए Q दोनों का इक्वल है, किस पर डिपेंड करेगा, किसका E ज्यादा है. अभी आपने मेरे को बताया E कहां ज्यादा है, A पर कि B पर? B पर. तो कौन सा फोर्स ज्यादा हुआ, टुवर्ड्स लेफ्ट कि टुवर्ड्स राइट? टुवर्ड्स लेफ्ट. ये वाला फोर्स बड़ा है, समझ में आया? सो E at B is larger than E at A, therefore force at B is larger than force at A, hence there will be net force. Hence there will be net force, and how much is that net force? FB minus FA. Now FB minus FA, can we find out the quantity? How much is this? This is Q, और ये किधर है? There will be net force towards ये, इस तरफ फोर्स लग रहा है, तो ये कौन सी डायरेक्शन है? ये क्लियर हो गया, डायरेक्शन हमको फोर्स की पता. अब मैग्नीट्यूड देखते हैं निकलता है कि नहीं. सो ये किसके बराबर होगा? Q इंटू E एट B माइनस Q F एट A. E at A, and this is only magnitude. Direction we have mentioned separately. ठीक है? ये ओके. दिस इज अवर एक्सप्रेशन फॉर इट. ये दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है? 2L. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंस कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंस कैसे निकालेंगे? ये देखिए, इंक्रीज 1 मीटर में कितना इंक्रीज हो जाता है? 10 to the power 5. तो 2 मीटर में कितना होगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2L मीटर में कितना होगा? 2L मल्टीप्लाइड बाय दिस, दैट इज द डिफरेंस. तो यहां पर Q हमने कॉमन निकाला, और ये जो बचा EB माइनस EA, ऐसा आ गया. फिर से देखिए, EB माइनस EA किसके बराबर होगा? EB माइनस EA इज इक्वल टू 2L मल्टीप्लाइड बाय, पर मीटर कितना डिफरेंस है? 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम. ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना डिफरेंस है इन 1 मीटर? सो 2L मीटर में होगा 2L इंटू 10 to the power 5. ये क्या आ गया? EB माइनस EA, और इसके बाहर कौन है? इसके बाहर कौन है? Q. अब देखिए, हमको Q नहीं मालूम कितना है, लेकिन हमको P मालूम है. तो P और Q का क्या रिलेशन होता है? यू ऑल नो P इज इक्वल टू व्हाट? अरे जल्दी, P इज इक्वल टू 2Q इंटू L. तो Q किसके बराबर हुआ? P अपॉन, यस. सो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये आया. अब देखिए, क्या क्लू मिला आपको? क्या होने वाला है? यस, 2L कैंसल, और P की वैल्यू हमको मालूम है. हाउ मच इज द P गिवन? 10 to the power minus 7. So this is 10 to the power minus 7. 2L cancelled, multiplied by
10 to the power 5, that is 10 to the power minus 2 Newton. ठीक है? So we got this answer. 10 to the power minus 2 Newton is the force. I will revise it once again. फिर से सुनिए. टॉर्क 0 क्यों हुआ? थीटा इज इक्वल टू 180. दैट इज इजी. फोर्स के लिए हमने क्या फॉर्मूला बनाया? फोर्स ऑन Q at B minus force on Q at A. Why minus? This is a larger force, this is a smaller force. So this is the net force, and what is its direction? Negative Z direction. QEB minus QEA, EB minus EA, and EB minus EA. How do we find out? The difference between the two is distance multiplied by difference per meter. Difference per meter multiplied by distance. 1 मीटर में कितना डिफरेंस है? 10 to the power minus 5. तो 2L मीटर में कितना डिफरेंस हो गया? 2L into this. इसके साथ ही हमने Q को कन्वर्ट कर दिया P upon 2L, because P is given and we want to cancel out 2L. 2L is cancelled, put the value of P and this, we got this answer. This is the force, this is the torque. Okay, so see this question. This is a hollow charge conductor. There is a cut here. Charge कहाँ reside करता है? On the external surface. So the charge will automatically come outside. Now they say that here there is a electric field. ये जो opening है, इस opening में electric field कितना है? Prove that electric field at the hole is this, where N is unit vector normal to the surface. नॉर्मल टू सरफेस, ये यहाँ पर सरफेस है और ये यूनिट वेक्टर n है. तो इनका कहना है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इतना है. दिस इज टू बी प्रूव्ड. कैसे प्रूव करेंगे? दिस इज नो कैलकुलेशन. सोचिए, देखो, this positive charge, because of these two, what is the electric field here? They cancel out each other, and what is electric field here? 0. These two cancel out and this is 0. आप बोलेंगे कि गॉस थ्योरम तो पहले से ही बोलता है कि अंदर में 0 है, तो फिर हम इसको क्यों बना रहे हैं? दैट इज ट्रू. गॉस थ्योरम जो बोलता है कि अंदर में 0 है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि इसने इधर बनाया, दोनों ने कैंसल आउट किया, कितना हो गया? 0. इसीलिए गॉस थ्योरम बोलता है कि अंदर में 0 है. समझ आया ना? गॉस थ्योरम किसके लिए है? टोटली क्लोज्ड सरफेस. क्या ये सरफेस टोटली क्लोज्ड है? नहीं है. बस वही हमको देखना है. देखिए, अब ये किसको कैंसिल कर देगा? इसको. हर पॉइंट के सामने दूसरा पॉइंट है जो उसको कैंसिल करेगा. एक पॉइंट ऐसा है जिसके सामने दूसरा पॉइंट नहीं है. दिखा? यस, दैट इज द आंसर. कहां पर है वो? ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से ऐसा बना. इसको कोई कैंसिल करने वाला नहीं है. बाकी सब इधर का और इधर का कैंसिल आउट हो गया. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचा? जो कि ये. दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एज इट इज नॉट कैंसल्ड. और ये कितना होता है? ये
एक फ्लैट सरफेस है, कंपेयर टू दिस स्मॉल होल, दिस इज ए फ्लैट सरफेस. और फ्लैट सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, अभी अभी आपने पढ़ा. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर. एंड हाउ मच इज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम फ्लैट सरफेस? E is independent of R, independent of distance R, and its magnitude is E is equal to सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. अभी हमने किया फ्लैट सरफेस में. ओके. एंड डायरेक्शन कैसी होती है? दिस डायरेक्शन. हाउ इज दिस डायरेक्शन? नॉर्मल टू दिस सरफेस. E वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट नॉर्मल वेक्टर. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी कैन डू इट. There are other interesting numericals that we'll do in the next class. Okay.